200 working hours. That means if you want to keep the economics of that particular machine, that means economically if you want to use that particular machine, then minimum working hours you need to attend with that particular machine. Otherwise, it is very difficult for a farmer to keep that machine with, and it's a waste of money. Okay, so the different approaches are there. You can, if you want to increase the economic, or you can get the benefit out of it, then with the help of different methodologies are there. So the farmer custom hiring centers are there, or whatever. There are different approaches to increase the use hours. But the farmers, there are, and in India more than 85% farmers, they are under small and marginal. Smaller and marginal farmers means less than 2 hectares land. And for them, it is very difficult to have each machines for every operation. Every operation. In other way, if you have the machine, then you have to maintain it for at least for the recommended life period. Let's say for 10 years. So how you can increase the life of that particular machine? So in that case, your maintenance is very important. Till this, as such, I believe that there is no issue. Okay? Let's move towards, beside this primary, secondary. There are again some secondaries are there, like your sprayers. You might have seen the sprayers or harvesting systems. They are again, like the soil medium, the chemical comes into the contact with your agriculture machines. Whether it is, that's why while designing different components, the corrosiveness of that particular material needs to be taken care of, and by keeping that particular in what way it is actually get eroded or corroded, that needs to be understood, and according to the selection of components. So the environment gets changed and your machine is susceptible to the different environment, and it gets, you can say, the life gets hampered because of that. At the same time, I just mentioned the harvesting machine, and you in the morning you tried your hands on that small mini combine. Again, while during harvesting period, the crop conditions are there, and when that field is the empty field, you are just trying in what way the controls are there. But when you are in the field and the standing crop is there, you need to take care of the crop also, and after getting whatever grain material out of it, the whatever straw or sometimes the stones are there, then you need to see that while operating, in what better way you can maintain that particular operational speed. I will cover in between that in what way. That means there, in that condition, harvesting, the straw, again the environment is different. At the same time, the moisture level of the straw is also different. So whatever reciprocating parts are there, in front of that combined harvester, there is one, you can say, the cutter bar mechanism. So in that, if the different moisture levels are there, then definitely, if some stalks gets in between the cutter bar, if it is not properly cut, and if your machine is not properly maintained, then definitely the higher damage to the machine will be there. So the environment always plays important role in life of that particular machine. Although there are different methods in what way to understand the reliability of machine. That is the different concern. Today just I will talk about the maintenance of agriculture machines. So I just give the idea about the tractor is there. Along with that tractor, different machines are there, and whenever the tractor and machine you are operating, the environment in which that particular machine is operating, that actually hamper the life of it. So maintenance of agriculture machines.
is very important. Let's move towards. I just initially mentioned about the farm mechanization. Although I just mentioned in some states where you have different level of mechanization, and it is very important to understand in what way actually the mechanization penetrates in different states of the country, and at the same time the state like J&K, it is very important to have different mechanization level, so that whatever agriculture or horticulture operations are there, that needs to be mechanized. And if you see the number of tractors or number of machines, lots of machines are there. That means you need to again have a great concern over the maintenance, because it is very difficult to purchase new machine after breakdown of that. So before breakdown you need, and lots of machines are there, so many manufacturers. The standard components are sometimes are not there. Some machines are you are importing from outside. So you need to see that in what way you can minimize the breakdown by keeping this scenario that lots of things are already on Indian farm. And definitely in coming years you will observe you people are working on different machines, whether these machines are precision machines or whatever the mechanical machines for different operations, their numbers are going to be increased. That means mechanism, we will see in one of the slides that in what way the projections are there. That means number of machines are there. Let's see. Although these are the pillars of agriculture mechanization, whether the farmers, their role is very important, and from farmer's point of view, because ultimately he has to, जैसे आप लोग गाड़ी खरीदते हैं, after sale, जो इसने परचेज किया है, that person is responsible for. तो हम गाड़ी को बड़ा अच्छे से पोंछते हैं, रखते हैं, शेड में रखते हैं, but we are not bother about our machines. हाँ, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखते हैं. You have to move towards. Like the farmers, some R&D institutes, new machines they are developing. So while development also, in what way the machine's life you can increase, ultimately what life cycle should be there, that needs to be taken care of. At manufacturer's level, although from government, the quality of machines are being monitored at different levels. Like here, I just in the morning I have seen that one testing center is there. So while manufacturing different components and ultimately the final machine, the quality of that particular machine needs to be monitored and the performance needs to be reported. So while purchasing or recommending a particular machine for a particular operation, the testing center should generate the report of that particular machine. And if that report is there, then only you can, by looking at the report, as per the different standards, like for testing, different standards are there. That means you need to operate that machine for, let's say, for 30 hours or 35 hours. So during that particular operational hours, if different components are not good in quality, then definitely those components gets broken. And that is actually reported there after 10 hours, let's say, the blades of rotator gets damaged or broken. So you need to see carefully while selecting that particular machine from a particular manufacturer. And again, in what type of soil it is operated, in what soil condition it is operated, because some soils like your sandy loam soil or clay loam soil, they are not that much actually having the strength. But if you go and see the black bottom soil having lots of strength, so if that machine is sustained in that particular condition, that means if you use that machine for these light soils, then definitely the life will be better. So
the reporting, that means the test report of a particular machine by that particular manufacturer, always important. And if you have a good quality machine with you, definitely you will not have that much maintenance in that, and we can say that that is the reliable machine. Okay, and ultimately some corporate sectors are also there, particularly in case of your tractors. Some foreign industries like your New Holland, they are corporate and they have the good products. Not only New Holland, there are other tractor manufacturers also. They are having very good tractors, and ultimately to monitor their quality, we have different centers. Like in Pune, our tractor manufacturer, this testing center is there. Sometimes you find time or try to visit that particular place and see that if the current tractor is there or new tractor is being promoted, then that tractor needs to be go through that testing procedure. Whether it is the performance test or whether it is whatever, number of hours test or lots of tests are there. So during those conditions, whether that particular tractor of that particular manufacturer really performing in a good way or not. If that tractor sustain, and if you have that report of that particular tractor in that particular environment, then definitely the good quality machine is there. Ultimately it's a machine, and you will able to have the, or you will see the less maintenance in other. At the same time, these are the, I just talk about the projection. Okay. It is initially a lot less number of tractors are there, so इतना maintenance का ध्यान में नहीं रखते होगे लोग, और long way में भी या broad area में भी हम इतना mind नहीं करते कि less numbers are there. But ultimately, जैसे what I just mentioned, that if numbers are going to increase, then definitely you need to take care of your machines. If you see the scenario of the pie chart is there, percentage of agriculture workers. That means they are going to be lesser in coming years. Their position will be taken by your machines. So again, machines are there, so their maintenance is very important. And at the same time, you just see what exactly scenario is there. The power kilowatt per hectare, that means that much power you are providing to have the mechanical, you can say you are providing the mechanical power. Initially, it was animate power, or sometimes the human power is there. It's a combination. Nowadays, the animate power, that means you are for different operations you are using some animals. But nowadays, the workers are there, agriculture workers are there, and at the same time mechanical power. But ultimately, just we have seen the scenario, and day by day or year after year, it's less number of workers are available. Like the situation we have seen in Punjab states, that's why that much mechanization level is there. So if you feel the requirement, then definitely their role, the agriculture workers gets replaced by your machine. So that means the power requirement, and the projection always suggests that the number of machines are going to be increased on Indian farms. Okay, so likewise the different scenario is there, because tractors, power tillers, some diesel engines and electric motors, definitely you have to take care of these things. Why these machines are important, that you already might have seen, that we need to have the better productivity, timeliness of operation is there. सबको जल्दी होती है मेरा खेत. For example, one machine is there and 10 farmers are there, and season is same, isn't it? Season is same. So demand at that particular short period of time, or we can record it small window. Like I just give the example for your knowledge, for harvesting of paddy and sowing of wheat.
very limited time window is there. So in that particular time, you need to harvest paddy and you need to provide. So machineries are there. So for timeliness, everyone having, so jaldi, so high productivity, high efficient machines you require, and if you operate it in a very careless manner, then definitely it is very difficult to maintain for longer. Some increased labor productivity and these things are there. If you use your machines, then definitely the saving is there. Like for seeds, it was just 15 to 20% saving will be there. Fertilizer you can save, time saving is there. That means that you can use it, that particular machine for longer duration also, and labor saving. Okay. This distribution I have already mentioned. On an average, 6 lakh tractors are being produced in India. Sometimes it goes beyond 8 lakhs also in recent years. And it's, you can say the 7 lakh, 7.5 lakh. That means these many number of tractors India manufacture. And if you manufacture good quality tractors or different power tillers or combine harvesters or thresher, their maintenance is very important. We will see that in what way, and lots of machines are there. I just talk about this at the initial period, that in what way the farm power availability, that means how much your kilowatt per hectare is there. If you see this scenario, this for this particular state, it will be more than 4 kilowatts per hectare. That means number of machines are required for different operations, and their maintenance is again very important. Just move. Okay. Why this maintenance is required? Just read. Maintenance basically concerned with the regular care and servicing, equipment to adjusting, repairing, recalibrating, machine ensures smooth and trouble-free operation. This is the prime requirement. I will just give the example. One of the customs hiring center, they are operating, you operated that small combine, they have 2 big combines for harvesting purpose, and they keep one technician from manufacturer side. Why? Because sometimes while operating that machines continuously, and I mentioned that very short period is there, let's say 20 days or maximum to maximum 25 days. So that custom hiring center, they want higher output from it. That means they want larger coverage. So more than 16 hours, 20 hours, that machine continuously operating on the field, and definitely if it is operating, sometimes you are shifting the drivers, let's say 8-hour shift is there, but that particular machine continuously operating, so it will get damaged or repair will be there. So a person who having the good knowledge or who is expert in what exactly part is there, which part gets, so the knowledge of the part is very important. So expert of that particular machine should be there. So we can call the whosoever dealer is there or company is there, and in between very short period of time try to replace the part and gets the maximum output out of it. Because once you that means within that particular short period, if he is not able to cover per hectare, less earning will be there. So from their point of view also, the good quality machine, at the same time the maintenance is very important. So the regular care, servicing, and after that particular
period of time, what you do with the machine? You are just parked wherever the space and whatever thing is there, and you are not bothered even throughout your whole year. बारिश में भीग रही है, पानी जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको रेगुलर सर्विस, रेगुलर केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डिफरेंट एडजस्टमेंट्स like somebody operating that particular combine, your focus should be there, what components, and at the same time whosoever nearby that particular machine, if some components their movement is not proper, improper movement is there, let's say the cutter bar where the power transmission is there, if some play is there or some nut bolts gets loosened, you need to adjust the tightness of that particular nut bolt, or you have to see that in what way you can maintain the proper motion in different components. If that take care, or if you maintain those adjustments, then definitely your machine you can run it continuously for longer duration and at the same time for many years. Then you just see that you can have read over it. I will provide this to you also. Then these I already mentioned, there are three main enemies: wear, dirt, and heat. Wear, dirt, and heat. That means within that short period of time, the parts, whether these parts are operating in a soil condition, soil having different, whether it is having the stones, gravels, or whatever, or roots, or a different moisture, continuously there is friction between these parts. So we are definitely it is so proper depth it should maintain. At the same time, dirt, if dirty environment, and the heat, so friction definitely. So these are the main enemies. Friction cause wear, same dirt, and this. In order to, if using, you need to provide some filters. Whether if you are using tractors or whatever machines, like the self-propelled machines are there, different filters you need to replace as per the recommended time. We will see that. Okay. Good maintenance keeps machine ready for work, prevent delays, save times, money, and crops. And at the same time, some tractor and farm machinery maintenance include daily and periodic service. That means while operating whatever machine you are using, daily you have to see that whether your machine is in proper condition or not. And at the same time, after operation also, you have to take care of that. I will just move. There are some points also here. They are again, we will see in between. One important point is to maintain the logbook in which whatever machine you are operating, at what time you have started, and if it is operating, let's say, for 5 hours, what you observe, whether your machine is intact or some parts got broken. So year after year, you will able to take the proper decision whether your machine requires more maintenance cost or not. If it is there, then definitely you have to go for replacement. Otherwise, providing the small maintenance cost, you can easily go for its use. Okay, we will see that in what way. So this is already mentioned. There is some regular care and periodic care, and it is already mentioned, particularly in case of your tractor. We will see in subsequent slides in what way the tractor has to be maintained, generalized. Okay, and particularly for farm machinery, for some machine it is already mentioned, but for different machines it is not there. So you have to keep your common sense there, and in what way you can use it in a better way, that needs to be
So some preventive measures, inspection, checkup, this is very important. आपको पहले तो knowledge होना चाहिए what type of machine is there, what critical components are there, which parts actually, some components they are actually having more wear as compared to some other parts. So your proper checkup should be there. Then you have to provide, if it is having some sort of dirt, or you need to clean it properly. Servicing needs to be given if it is required. नहीं तो हम सिर्फ गाड़ी में बैठते हैं हम चालू कर रहे हैं. If you are not maintaining your car or bike whatever, then definitely some problem you will face. बीच में जाएगी खराब हो जाएगी. वहाँ तो चल भी जाएगा. If you riding or you are taking the vehicle, transport vehicle, थोड़ा सा टाइम डिले हो जाएगा. But in case of agriculture operations, it is very difficult. It becomes very difficult. If you are doing harvesting, suppose, and your machine gets, then आपको या तो मैन्युअली किसी को ह्यूमन को लगा के आपको काम पूरा करना पड़ेगा, or you have to wait for that machine gets repaired and then you can use it. But till that, if बारिश आ गई या कुछ हो गया, then your whole जो भी आपका हार्ड वर्क होगा 3 months 4 months, तो आपको अगर मैं मशीन मेंटेन करनी है, that means the regular checkup, inspection, servicing, periodic care, adjustment, record keeping, these points are very important while maintaining your agriculture machine. But how much you farmers or that particular person bothers, लेकिन आप जैसे लोग जो ऑलरेडी कुछ पर्टिकुलर इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर वो सजेस्ट करते हैं और अपने से शुरुआत करते हैं, जहाँ आपको मशीन दिखती है, सही में ये मशीन सही कंडीशन में है या नहीं, और फार्मर्स को बताते रहो. You just check your machine that nut bolt is not properly fixed. तो उसका वो टूटेगा नहीं, वो अच्छे से पहले रिपेयर करेगा और उसकी लाइफ बढ़ जाएगी. So that actually this particular slide suggests that what preventive maintenance you can. Let's move towards the tractor related maintenance. I will just move fastly with this. सब लोगों को पता होगा different systems are there, is not it, for tractors? कितने लोगों ने ट्रैक्टर्स के सिस्टम्स अंडरस्टैंड किए हैं? नहीं? Some basically there is some difference between your very little difference between your car or whatever vehicle and the tractor. Let's start with टायर साइज डिफरेंट होती है, ठीक है? उसका इंजन थोड़ा सा अलग होता है, होगा वही 4 स्ट्रोक डीजल इंजन ही होगा. इज नॉट इट? पेट्रोल ट्रैक्टर देखा है किसी ने? नहीं होता ना, ट्रैक्टर डीजल होगा. But at the same time, some small self-propelled machines are there. They are petrol operated. Is not it? But whether it is a petrol vehicle or whether it is diesel vehicle, some systems are very common. Okay? There are fuel tank होगी वहाँ पे. Some filters are being used. For that purpose, I will just keep this. But particularly for this tractors, you are attaching your equipment at the rear end of the tractor. So some systems are there. So for attachment, let's say the drawer attachment is there. आप कभी इसमें कई ट्रैक्टर्स वगैरह देखोगे तो आप थोड़ा सा अच्छे से उसे देखिए चारों तरफ से. There is fuel tank, there are oil filters, air filters, some exhaust. जैसे गाड़ी में वहाँ at the bottom of, but in case of tractor is at top. थोड़ा सोचिए why it is that particular muffler is provided on that particular height. Why the front wheels of these tractors are small? Why these rear wheels are big? Okay, इनके सवालों के जवाब आप पहले सोचेंगे
तो आपको उनका जवाब है। और इसी से रिलेटेड and we have designed or we have developed this particular system for agriculture operations, that means whatever environmental condition I have just mentioned, in that different systems, I will have the list of different systems. We will see that in what way we have to take care of that. That means number of components are there, and for those number of components having different lubrication system, that means lubrication system is there, electrical system is there, your that we will see that. Okay? And one more point is that some tractors are two-wheel drive, that means just the big two wheels they having, जैसे आप थार के बारे में पढ़ते हो, टू व्हील ड्राइव एंड फोर व्हील ड्राइव, सेम सिस्टम, ये सब यही से आया है, बिकॉज this particular you can say the power source is a off-road type of vehicle. So according to you have to see that where some control systems, that means clutch arrangement is there, axle systems are there, transmission systems are there, this particular power train, that means lots of gears. आपने ट्रैक्टर कभी सोचा है कि 100 किलोमीटर पर आवर से भागता है? नहीं, बिकॉज आवर पर्टिकुलर पर्पज इज नॉट द स्पीड, आवर मेन पर्पज इज हायर टॉर्क. That's why in order to reduce, because whenever the combustion happen, the fuel consumption, this combustion happen, camshaft, crankshaft, and finally water speed, lots of RPMs are there. So you need to convert those speed into a power. That means it's high torque, and that's why these particular your tires are big in number. आपने देखा ना क्या है, अभी इक्वेशंस नहीं पूछेंगे आप, ठीक है, लेकिन उसमें रेडियस का रोल आता है, ठीक है. That's why to have that, or ultimately the gear system, planetary gear system is there. So that means lots of complex systems are being, some power outlets, that means basically these outlets are very important. Why? Whatever machineries you will observe, those machines either it is powered by the hydraulic system, some drawbar hitch, like this, you are attaching your equipment this 3-point, that means at the back of the tractor, from which you are actually attaching the equipment and taking the work from that equipment, is not it? Some belt pulley and PTO shaft. PTO shaft means power takeoff, that means here at the rear end of the tractor one rotary unit is there, and fixed RPMs are there. Normally 540 plus minus 10 RPMs are being quoted. Some tractors and more than 1000 RPMs also, but for particular purpose. So these power outlets, they are very important. If you attach your machine in a proper way, then only you can able to harness or you can efficiently use that. So while maintaining, you need to understand from where actually you are taking the power, and the power source itself is a very important player while having that particular operation. And at the same time, if you maintain your power source properly, definitely you can use your machine in a proper way for a bit longer life. Some gauges are there, like your car, different gauges. You have to keep your eye on these gauges while operating, or while, if some problem is there, definitely they will blink. If it is not properly, this gauge is not properly giving the indicator, then you need to see that in what way what type of system gets repair or service that you can have for it. Okay. I just mentioned different systems are there, like fuel system,
air system. While using these systems, particularly for fuel, you need to use clean fuel. जस्ट हम लोग बॉदर नहीं करेंगे, जो है वो ट्रैक्टर है तो क्या हो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम, like your air intake, whatever filters are there, you just see, clean the air cleaner from where the air gets entered into your combustion chamber or whatever engine system is there. If you are not using or you are not cleaning that air cleaner, then dirt mixture will be there and definitely your whole system gets affected. So you are in to, उसमें क्या लिखा है, change the fuel filter periodically. Whatever tractors are there, they provide the schedule. Okay, let's say these many hours if you operate, or the time, जैसे गाड़ियों में भी होता है, या तो आप इतना किलोमीटर के बाद या इतने सालों में, एक साल के बाद, जैसे इसमें भी ऐसे होता है. आपको या तो आवरली आपको देखना है किस टाइप के ऑपरेशन के लिए आप यूज कर रहे हो, तो ये आवर्स के बेसिस पे मैक्सिमम चलता है. ठीक है. और दूसरा जो है आपका साल में एक बार तो आपको वो सब चीजें सही से करनी चाहिए. देन एग्जॉस्ट सिस्टम को भी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, हम लोग बॉदर नहीं करते हैं. कीप स्टार्टिंग मोटर ऑफ द इंजन इन वर्किंग कंडीशन. रेगुलरली हमको शुरू करते रहने चाहिए हमारे इंजन. Then only you will able to maintain for a longer. Then check and top the battery. This is very important. ट्रैक्टर की बैटरी बहुत बड़ी होती है, ठीक है. उसमें जो भी डिस्टिल्ड वाटर है उसका लेवल आपको मेंटेन करना है. एसिड तो है ही, डिस्टिल्ड वाटर का लेवल मेंटेन करके चलना, वहां पे मार्किंग दी होती है. दैट यू हैव टू मेंटेन. एंड एट द सेम टाइम अगर आप यूज नहीं करते हो, ठीक है, तो अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर ट्रैक्टर यूज नहीं करना चाहिए, यू हैव टू रिमूव दैट बैटरी, सेपरेट इट आउट, एंड यू कैन यूज सम पेट्रोलियम जेली. यू पुट ऑन दी सम जेली ऑन द टर्मिनल्स, जो इलेक्ट्रोड के ऊपर में काम होता है उस पर रख के आप, अदरवाइज एयर के साथ फिर इंटरैक्ट होगा और केमिकल रिएक्शन आप जानते हैं एंड बैटरी की लाइफ खराब. जब भी आपको जरूरत पड़ता है प्रॉपरली उसको फिर अटैच करें एंड यू कैन यूज इट फॉर ट्रैक्टर. एंड यू कूलिंग सिस्टम, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज दिस बेल्ट सिस्टम इज बीइंग प्रोवाइडेड, सो यू हैव टू सी दैट बेल्ट टेंशन सही है या नहीं है. अदरवाइज आपका कूलिंग सिस्टम रेडिएटर में सही से हवा नहीं वो करेगा, आपका इंजन सिस्टम ज़्यादा हीटिंग होगा और ज़्यादा वर्क आवर्स के लिए आप काम नहीं कर सकते. दैट मीन्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेली यू हैव टू सी दैट एंड कूलेंट, प्रॉपर कूलेंट यू हैव टू यूज रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, वही आपको यूज करना है. ठीक है. Lubrication system, clutch system is there, hydraulic system, these are very important. जहाँ wherever required grease, you need to provide some oil and filter. These things you need to replace timely. Then we will see in that some chart I have given here in what way you can. Then hydraulic system, which it is very important. ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक सिस्टम, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन हाइड्रोलिक सिस्टम? ट्रैक्टर के पीछे जो एक इम्प्लीमेंट लगाया जाता है, कैसे अप एंड डाउन होता है बिकॉज ऑफ डिसोर्डर. हाँ, उसमें दो लीवर्स दिए होते हैं, वन इज फॉर डेप्थ एंड वन इज फॉर पोजीशन. ठीक है. वो एक हाइड्रोलिक सिस्टम में चलता है, उसका अपना साइकिल है. If you are not using pure recommended hydraulic oil of recommended grade, that means the viscosity gets changed, and this tractor is for this hydraulic system is continuously operating. और उसमें ज़्यादा प्रेशर रहेगा या ज़्यादा फोर्स रहेगा. If you are not using proper grade of the
that hydraulic oil, definitely system failure will be there and you are not able to use it for longer. ब्रेक्स वगैरह ये कॉमन है कि आपको सही से वो करने चाहिए, ले वगैरह। टायर्स प्रॉपर एयर प्रेशर आपको मेंटेन करना चाहिए। एक जगह पे आएगा कि इफ यू वांट टू हैव ए गुड ट्रैक्शन, वी विल सी दैट इन व्हाट वे। आपको एयर की जगह रियर व्हील में वाटर भी भरना पड़ता है, ठीक है। अगर वाटर नहीं है तो एक अलग से व्हील्स भी लगाने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे पडलिंग कर रहे हो, पडलिंग पता है आप लोगों को, है ना। उसके साइड में आप केज व्हील देते हो जिससे आपका ट्रैक्टर कीचड़ में फंसेगा नहीं। उसी तरीके से आपको अगर सही से उसमें ट्रैक्शन चाहिए, हवा है तो वो जगह पे घूमता रहेगा, क्योंकि आपकी जो मॉइस्चर एंड सॉइल का जो कंडीशन है वो इस तरीके से अलग होता है कि जैसे वो स्लीपेज ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा वहाँ पे फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। देन अल्टीमेटली आपको वेट बढ़ाना है ट्रैक्टर का, देन यू विल feel some water, how much percentage that we will see in some slides, what way you can increase the weight and what is the recommendation that we will see. So these things very important, air pressure, then आपको कौन से जो फ्रंट व्हील होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक अलाइनमेंट होता है, ठीक है। उसको थोड़ा सा नॉर्मल कार वगैरह की तरह एकदम स्ट्रेट नहीं रहता है, ठीक है। जो सवाल आप प्रॉपरली जब किसी भी व्हीकल को ऑब्जर्व करेंगे, पर्टिकुलर ट्रैक्टर को, तो आपको कुछ सवाल आएंगे। जैसे मैंने बताया कि एग्जॉस्ट पाइप कहीं और होता है, ट्रैक्टर के व्हील्स बड़े होते हैं, है ना। उसी तरीके से ट्रैक्टर का फ्रंट व्हील जो है एक इंक्लिनेशन, 2 इंक्लिनेशन उसको देते हैं उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली the rear end tractor, these wheels are bigger in size and you are having much more power in those wheels, so steerability gets, and at the same time you are not operating these tractors on a very smooth surface. Some clods are there, some maybe कुछ गड्ढे हो गए, कुछ ना कुछ होगा, then that angles वो होता है कैस्टर एंगल एंड कैम्बर एंगल। आप अगर डिटेल्स में कभी पढ़ोगे तो आप उसको, दैट मीन्स दैट अलाइनमेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड वो उसमें है या नहीं है वो आपको चेक करके आप उसको प्रॉपर स्टेबिलिटी को अटेंड कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो जनरल है। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ट्रैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज रेगुलर इन बिटवीन 8 to 10 इंजन वर्किंग आवर्स। जब आप ट्रैक्टर अपना ऑपरेट करते हो तो व्हाट पॉइंट्स you need to understand, clean tractor and implement, this is very important। whether your tractor you are using or implement, पहले तो आपको 8 and 10 working hours के बाद I will provide this PPT to you, don't worry about it, ठीक है। तो उसको सबसे पहले क्लीन करना है। what we some commonly trying to do, just we are taking whatever attached equipment is there without cleaning, हम खेत में ले जाते हैं उसको ऑपरेट करते हैं, तो that we need to avoid। then check oil level on a horizontal surface, ठीक है। this is very important। once again आप अगर ट्रैक्टर को आपके उस पे रखते हैं, एक लेवल पे रखते हैं, then उसमें जो लेवल्स है, वाटर की लेवल हो गई या ऑयल्स की फिल्टर्स की लेवल हो गई, if it is at proper position then only you can go for the operation, otherwise avoid it। fuel जो लेवल मेंटेन करिए, then you can go for remove sediments from the air pre-cleaner। जो आपका आप जब देखोगे एक क्लीनर होता है वहाँ पे जहाँ ट्रैक्टर ड्राइवर बैठता है, उसमें उसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। वो अगर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक उसमें है, डर्ट है, देन यू हैव टू क्लीन दैट इन अ प्रॉपर वे, या रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। देन टॉप ऑफ द फ्यूल टैंक, आपको ट्रैक्टर का टैंक भर लेना है। देन आपको पढ़ लीजिए आप कैसे कैसे उसे क्लीन द रेडिएटर, देन टेंशन जो वी बेड्स होते हैं उसमें जो रेडिएटर, ये सब आपको उनका टेंशन प्रॉपरली देखना है।
ये 8 to 10 आवर्स के बीच में आपको कंटिन्यू करना है। 8 to 10 आवर्स में आपके ज़्यादा मेंटेनेंस के क्राइटेरिया हैं, ठीक है। देन इन सब्सिक्वेंट आवर्स में थोड़े से कम हो जाते हैं, बट ये आपका कॉमन चेक्स है। चेक द टाइटनेस ऑफ फ्यूल, ऑयल, वाटर पाइप्स, होस, क्लीनर्स, फिल्टर्स, ड्रेन प्लग्स। इनमें आपको जो लीकेज वगैरह है ये आपको पता चल जाएगा। अगर इसमें कहीं पे भी लीकेज है, देन यू हैव टू गो फॉर सर्विसिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है। अदरवाइज इन बिटवीन आपका ऑपरेशन में वो खराब हो जाएगा और आपके पूरा ऑपरेशन प्रॉब्लम। Then make the inflation of front and rear tire as per the recommendation, ठीक है। जो टायर प्रेशर होता है उसको मेंटेन करके चलना है। चेक इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, किसी के केबल्स वगैरह कहीं पे कुछ वो तो नहीं हुई है, उनके कनेक्शन सही है या नहीं है। चेक द लेवल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मैंने कहा कि जो बैटरी यूज हो रही है वो सही लेवल पे है या नहीं, वो आपको चेक करना है। देन लुब्रिकेट ट्रैक्टर्स as per the recommendation of the manufacturers। फ्रंट व्हील वगैरह बियरिंग्स होते हैं उसमें आपको ग्रीसिंग वगैरह करनी पड़ती है। एंड पर्टिकुलरली जैसे लास्ट पॉइंट था कि आफ्टर पॉडलिंग ऑपरेशन बेसिकली, ठीक है। आई विल मूव, ओके। देन चेक ऑल जॉइंट्स, जो भी स्टीयरिंग वगैरह के हैं, उसके लिंकेजेस है, बोल्ट है, screws है। Then you have to see that your engine runs smoothly or not। some अच्छा नॉइज नहीं होगा, उसके रिकमेंडेशंस होते हैं। या जो फ्यूल बर्न होने के बाद जो स्मोक बाहर आ रहा है उसका एक कलर, अलग कलर आने लगा, ब्लू, लेट्स से ब्लू कलर आने लगा, उनके अपना वो है, या ज्यादा ब्लैक आने लगा, तो आपको देखना है कि क्या ऑयल इंटर हो रहा है क्या। दैट मीन्स अगर हो रहा है तो आपके सर्विसिंग की ज़रूरत है, ठीक है। ऑयल रिंग्स हो सकता है कि वॉर्न आउट हो, और लुब्रिकेशन के पार्ट्स का ऑयल वगैरह उसमें एंट्री कर रहा है, दैट्स व्हाई डिफरेंट स्मोक कलर इज देयर, वो इसीलिए ये सब। और दूसरी आवाज़ आ रही है कि ये सब आपको देखना पड़ता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट प्रॉपरली मूव हो रही है या नहीं वो आपको पता होना चाहिए। व्हाट आफ्टर 50 to 60 इंजन वर्किंग आवर्स, ठीक है। जैसे पहले था वैसे देखना है, लेकिन यहाँ पे क्लच वगैरह सही है या नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड इफ इट इज नॉट, देन यू हैव टू एडजस्ट द क्लच, एंड एट द सेम टाइम whether your brakes are in a good condition or not, that you can see. After 100 to 120 engine hours, we just see the point, disconnect the cable from electrical equipment, then apply the grass, ये आपको करना है। इंस्पेक्ट द वाटर पंप्स, नो लीकेज, लुब्रिकेशन वगैरह का आपको वो सब देखना है, ठीक है। आई विल प्रोवाइड दिस। सेम तरीके से आफ्टर हाउ मेनी वर्किंग आवर्स व्हाट पॉइंट नीड्स टू बी कंसीडर। बेसिकली जो आपका प्रीवियस है वो आपको करना ही करना है, ठीक है। विच इज, और जैसे सबसे इम्पोर्टेंट था क्लीन करके ही आपके मशीन को, और उसके जो भी क्या हुआ, इज एनी इश्यू इज देयर, ओके। आई विल जस्ट मूव टुवर्ड्स दिस। These are the checks that needs to be monitored at every 10 interval of time, 50 interval of 50 hours, then third 300 hours, 600 hours, and if it is more than 1000 hours. That means you need to operate your tractor at least for 1000 hours in a year. Then only जो इकोनॉमिक्स की बात कही, एंड while doing operating for that 1000 hours, these points as per different system, कहाँ पे क्या चेक करना है उसका ये क्राइटेरिया दिया है। आई विल प्रोवाइड दिस, ठीक है, फॉर different systems. This I already mentioned that for tractor also
जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, they are providing your this service book to you, and it is very important. जैसे मैंने बताया कि मशीनरी के बारे में भी आप अगर कंपनी में सर्विस बुक नहीं प्रोवाइड करती है, यू कैन मेंटेन योर सर्विस बुक, ठीक है, ट्रैक्टर के लिए तो मिल जाएगा, बट आपको इसका डेली रिकॉर्ड, उसका क्या फ्यूल कंजम्पशन था, वेदर इट इज एप्रोप्रिएट फ्यूल कंजम्पशन. If the more fuel consumption for that particular operation, if you observe, then definitely some problem is there. Okay? So these things you need to understand while and that you can understand only after keeping the records of agriculture tractors or machines. ठीक है, then service record का ये तो होता ही है, ये आपको बहुत जरूरत इम्पोर्टेंट है. स्टोरेज तो जो ट्रैक्टर का है कैसे करना चाहिए उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, दैट यू कैन प्रोवाइड दिस एंड यू कैन अंडरस्टैंड. जस्ट मूव टुवर्ड एक रिकमेंडेड वो होता है. दिस इज जो मैंने कहा वाटर को फिल अप किया जाता है, उसको वेल ब्लास्टिंग कहते हैं. ठीक है, I will show that the figure. इनके प्रॉब्लम भी होते हैं, अगर आप कम वो रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, और ज़्यादा ब्लास्टिंग, दैट मीन्स आपको यहाँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है कि फॉर व्हाट ऑपरेशन यू आर प्रोवाइडिंग दैट एक्स्ट्रा वेट विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, हाउ मच. ठीक है, वो सब सॉइल कंडीशंस और टाइप ऑफ ऑपरेशंस के लिए. सी दिस इज अ पर्टिकुलर सिनेरियो. जब भी आप किसी गैरेज वगैरह में अगर ट्रैक्टर है और उसको रिपेयर करना है तो उसमें एक जब वाटर का वो खोल देते हैं, जब बहुत सारा पानी निकलता है, ठीक है, उससे फिलअप भी किया जाता है एंड उसको ड्रेन आउट भी किया जाता है. ठीक है, लेकिन ये ऑपरेट उसी कंडीशन में करना है जहां आपको ज़्यादा ट्रैक्शन की जरूरत है. ट्रैक्शन में मतलब ये सॉइल और टायर के इंटरफेस में होता है, जिसकी वजह से आप अच्छे से उस पर्टिकुलर कंडीशन में ट्रैक्टर को ऑपरेट कर सकते. आपको बड़ा बड़ा मतलब उसके अपने इक्वेशन से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब है, लेकिन उसमें सबसे अच्छा रोल होता है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वेट. ठीक है, ACW10 उसका इक्वेशन है, उसमें जो वेट फैक्टर है W जो बोल रहा है, बाकी फैक्टर्स अपनी जगह पे है, वो सॉइल रिलेटेड कुछ फैक्टर है, लेकिन वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई या तो फिर आपको कुछ एडिशनल वेट्स भी देने पड़े. ठीक है, या तो एरिया बढ़ाओ, जो आप केज व्हील यूज करते हैं उससे कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ता है. ठीक है, और जब वाटर फिल अप करते हैं तो आपका वेट बढ़ता है. तो आइदर इसीलिए कुछ कंडीशंस में आप देखेंगे, कुछ स्टेट्स में ट्रैक्टर की टायर साइज थोड़ी छोटी होती है, वो सब ट्रैक्टर किस सॉइल कंडीशन में ऑपरेट हो रहा है, क्या मॉइस्चर कंडीशन है, क्या क्रॉपिंग में है, उसके ऊपर सब डिपेंड. ठीक है, ये थोड़ा यू गॉट द आइडिया व्हाट एग्जैक्टली थिंग्स आर देयर. इसके लिए बहुत थोड़ा डिटेल्स में होनी चाहिए आइडिया, बट आई विल गिवन सम. चलो, उसमें जो प्रैक्टिकल के रिलेटेड एक वर्क था कि डिफरेंट मशीन्स के बारे में बताया था. एक मशीन होती है रोटावेटर. किसने रोटावेटर देखा है, ऑपरेट किया है? देखा तो है. एक बड़ा सा पीछे में ये ट्रैक्टर के पीछे में अटैच होता है, और ये उसका डिफरेंट टाइप्स के ब्लेड्स होते हैं. तो इसको अच्छे से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, इनके अपने टाइप्स होते हैं, लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, हेवी ड्यूटी होता है, और ये आज के डेट में प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी टीनेज का कॉम्बिनेशन वाला एक मशीन है. क्या आपको चाय पीनी है तो चाय पी लो. रोटावेटर नहीं देखा क्या आपने? देखा है ना? ठीक है, चलो फटाफट कर दीजिए. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दो चीजें होती है.
एक पीटीओ से जो पावर, ट्रैक्टर के पीटीओ से पावर आती है, तो एक गियर बॉक्स होता है सेंटर में, ठीक है, जो ये सेंटर होता है ये वाला, इसका सही से ध्यान रखना है। एंड एट द सेम टाइम एक साइड में इसमें भी 2 गियर्स लगे होते हैं, ठीक है। अब उसको मेंटेन करना आपके ऑपरेशन के ऊपर सब होता है, लेकिन इनके अंदर में जो ऑयल का लेवल है, एक रिकमेंडेड वर्किंग आवर्स है, उसके बाद उसको ऑयल को बदलना है, दैट इज देयर 50 आवर्स का, वो आगे वाले स्लाइड में लिखा है। बट इफ यू यूज प्रॉपर ग्रेड ऑफ ऑयल and if you replace that oil after the recommended period, then only you can use this particular machine for longer duration. Otherwise, यहाँ से जो पावर जा रही है, then ट्रांसमिट होके आपके इस शाफ्ट में जो जा रही है, इसमें प्रॉपरली नहीं ट्रांसमिट होगी और आपके गियर बॉक्स भी टूट सकता है, या इसके गियर टूट सकते हैं, या ब्लेड्स के ऊपर ज्यादा थ्रस्ट आता है, ठीक है। तो इनका मेजर जो है प्रॉपर अलाइनमेंट आपकी ठीक है, जैसे रिकमेंडेड 3.20 से लगाना है, पीटीओ से जोड़ना है, बट क्रिटिकल जो इनके ये 2 गियर्स है सेंटर एंड साइड में, इसके ऑयल्स के लेवल्स को आपको सही से मॉनिटर करना है, ठीक है। जैसे 40 to 50 आवर्स में आपको इसे जरूर चेक करना है, ठीक है, तभी आपका रोटावेटर जो है सही से ऑपरेट कर पाएगा। एंड एट द सेम टाइम जो भी, क्योंकि इसमें ब्लेड्स लगे हैं, वेल्डेड होते हैं, एंड कुछ जगह जैसे ब्लेड्स जो अच्छा ब्लेड है उसको जो गैंग है, कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, वो नट बोल्ट से टाइट होता है। आपको देखना है कि सभी आपके जितने ब्लेड्स हैं आप कभी काउंट करके देखिएगा, ट्राई टू काउंट हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्लेड्स आर देयर, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर एक ब्लेड लूज हुआ, वो कहीं पे दूसरे ब्लेड के कांटेक्ट में आए, क्योंकि जब सॉइल के साथ मिक्स हो रहा है, वो सॉइल की जगह वो खुद आएगा और एक की वजह से दूसरा ब्लेड आपके डैमेज हो गया। तो इसलिए प्रॉपर ध्यान रखना है, कुछ डिफरेंट नॉकिंग तो नहीं आ रही है व्हाइल ऑपरेशन। हाँ, शुरुआत में यही देखना है कि नट बोल्ट सब सही है क्या, एवरी नट बोल्ट उसके सही से टाइटन है या नहीं है, अदरवाइज यू हैव टू फिक्स इट प्रॉपरली देन ऑपरेटिंग, ठीक है। और फिर आप रोटावेटर भी आपका सही से वो हो जाएगा, मेंटेन कर पाओगे। एक डिस्क हैरो होता है, ये देखा है आप लोगों ने, ठीक है। इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सेकेंडरी इम्प्लीमेंट है सेकेंडरी डिस्क के लिए। इसमें बेसिकली ये डिस्क जो है, इनका प्रॉपर जो 2 होते हैं, उनका गैंग एंगल एंड सम डिस्क एंगल, वो थोड़े से डिटेल्स में यहाँ नहीं बताऊँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लेकिन इनमें भी जो स्पूल है, इनके बियरिंग्स है, वो आपको पहले तो सबसे पहले जब भी आप ऑपरेशन हो जाएगा, फील्ड ऑपरेशन, आपको क्लीन करके रखना है, ठीक है। एंड जहाँ बेयरिंग्स या मूविंग पार्ट्स है, उस जगह पे प्रॉपरली ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग होनी बहुत जरूरी है। Then only you can use these kind of machines. ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा कि इनके क्या बेसिक क्राइटेरिया है, क्योंकि ये डिस्क हैरो जिस वजह से ये ऑपरेट होते हैं, ठीक है, सब टेक्निकल पार्ट्स आर देयर, लेकिन बड़ा आप समझिए कि जो डिस्क है उसका एक फिक्स एंगल होता है, रिकमेंडेड एंगल होता है, ठीक है, और उसका टिल्ट एंगल भी होता है। डिस्क एंगल एक होता है, टिल्ट एंगल एक, ये प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम जिस बेयरिंग में ये लगे हैं वो सही से फिट होनी है, अदरवाइज यू विल फेस सम इश्यूज। इनके वो दिए हैं क्या क्या, बेसिकली वही रहता है, वॉश करके रखना है, रिप्लेस करना है नट बोल्ट को, या ये कुछ प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, आई विल प्रोवाइड दिस। ओके, कल्टीवेटर भी आपने देखा होगा, दिस इज वेरी सिंपल इक्विपमेंट, और इसमें बेसिकली ये आपका जो शॉवेल है,
इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू सॉइल कंडीशन या फील्ड कंडीशन, किस टाइप से आपको यूज करना है। इसमें ज्यादा मूविंग पार्ट्स नहीं है, उसके ऊपर माउंट होती है।